फातिमा अभी आवाज आ रही है क्या? फातिमा भाई ऑडिबल ना? अभी आ रही है आवाज? नहीं आनी चाहिए यार। हाँ क्यों नहीं है? अभी आ रही है आवाज? हेलो। फातिमा मैं ऑडिबल ना? फातिमा अभी आवाज आ रही है मेरी? फातिमा am I audible now? Yes, sir. Okay. Fatima, as the other students haven't joined, so we won't move forward today. You can ask me your doubts, जो भी doubts हैं, वेक्टर्स या कोई भी चैप्टर से अगर कोई भी डाउट है तो हम डाउट सेशन रख लेते हैं अभी। आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि अभी तो फुल स्ट्रेंथ नहीं है क्लास की। Sir, can you explain exercise 10.2 15th question? Yes.
10.2 15th क्वेश्चन। ओके, फातिमा ये पूरी करनी है एक्सरसाइज वेक्टर्स और 3D की मिसलेनियस तक। वेक्टर 3D पूरा एनसीईआरटी से कंप्लीट होगा तो बिल्कुल यहीं से ही क्वेश्चन आएगा उठ के, दिस इज श्योर। और 10 से 12 मार्क्स का आता है इजीली, तो काफी बड़ा पोर्शन। ओके, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट R which divides the line joining 2 points P and Q whose position vectors are this in the ratio 2:1। और पहला है इंटरनली एंड सेकंड है एक्सटर्नली। ओके, तो हम जानते हैं सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले तो फटाफट से एक बार सेक्शन फॉर्मूला इंटरनली एक्सटर्नली दोनों में बता देता हूँ। मैंने सिर्फ इंटरनली बताया था लास्ट टाइम, और ये चीज हमने ऑलरेडी 10th क्लास में भी देखी थी। इनफैक्ट 10th 11th में भी बताते हैं हम लोग इस बारे में कि इंटरनल और एक्सटर्नल दो डिवीजन होते हैं। नाउ इंटरनल डिवीजन कैसे है? जैसे कि ये पॉइंट एक ए है, इन दिस केस पॉइंट्स आर गिवन एज पी क्यू एंड आर। सो पी क्यू एंड आर मतलब इंटरनल डिवीजन का मतलब ये है कि पी क्यू कहीं, पी और क्यू हमारे पास कोई दो पॉइंट होंगे जिनसे एक लाइन बन रही होगी, राइट। और आर इसको बीच में से कहीं ना कहीं से कट करेगा। आर इसको बीच में कहीं से कट करेगा। इंटरनली मतलब इस लाइन पे ही कहीं ना कहीं आर होगा। जैसे कि इस केस में आर कुछ ऐसा दिया हुआ है कि आर यहां पे है और आर इसको 2:1 में कट कर रहा है, राइट, इन दिस केस। ठीक है। और एक्सटर्नल डिवीजन का क्या मतलब होता है? एक्सटर्नल, अब इस एक और बात समझ ली कि 2:1 क्यों बोल रहे हैं हम इसको। हम बोलना ही चाहते हैं कि पी आर जितना डिस्टेंस है, पी से लेके आर तक का जितना डिस्टेंस है उसका हाफ डिस्टेंस होगा आर से लेके क्यू तक। मतलब ये जो 2:1 लिखा हुआ है ये रेशियो है इनके डिस्टेंस का, पी से लेके आर तक और आर से लेके क्यू तक। तो एक्चुअली हम ये बोल सकते हैं कि पी आर विद रिस्पेक्ट टू आर क्यू इज इक्वल्स टू 2/1। इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। अब ऐसी एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है? तो लेट्स से एक्सटर्नल डिवीजन, हाँ चलो मैं पहले ये हटा देता हूँ और पहले मैं इसको सिर्फ इतना बनाता हूँ। तो एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होता है कि अभी हमारे पास ये फिर से पॉइंट्स है पी एंड क्यू, बट आर इस बार इसको इंटरनली डिवाइड नहीं कर रहा, यानी कि आर इस लाइन पे लाई नहीं कर रहा जो यहाँ पे दिख रही है हमें पी की, इसके बाहर लाई करता है इसी लाइन पे एक्चुअली, बट तेरे को ये लाइन एक्सटेंड करनी पड़ेगी, यानी कि आर यहाँ पे जाके होगा। तो आर अब इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहे हैं, इस लाइन को हम ऐसे बोलते हैं। अब इस बार भी 2:1 है, तो इस बार 2:1 का क्या मतलब है कि पी से लेके और आर तक का जो डिस्टेंस है वो अगर 2 है तो क्यू से लेके और आर तक का डिस्टेंस 1 होगा। इसका ये मतलब है। पहली बात तो इंटरनल एक्सटर्नल डिवीजन कैसे होता है ये समझो। अब फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है? तो कल हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा था इंटरनल डिवीजन का, कि अगर ये वेक्टर हमें पता है क्यू वाला, पी वाला वेक्टर पता है, तो हम 2 टाइम्स क्यू वेक्टर प्लस 1 टाइम पी वेक्टर और डिवाइड कर देंगे होल को डिवाइडेड बाई 2+1 यानी कि 3 से, तो हमारे पास आर वेक्टर आ जाएगा, राइट। तो वी नो दैट द वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, पोजीशन वेक्टर हमें ऑलरेडी दिया गया है, तो यानी कि ओपी दिया हुआ है, ओक्यू दिया हुआ है, वी हैव टू फाइंड आउट ओ आर। ओपी हमारे पास है I+2j-k, ओक्यू हमारे पास है -I+j+k। We have to find out OR, right? So OR in this case, internal division, in this case, OR can be find out twice of OQ vector plus 1 times of OP vector divided by 3। जो भी वैल्यू आएगी सॉल्व करके, चलो देख लेते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये बन जाएगा 2i प्लस 4j माइनस 2k। और अगर इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ओपी को, ओ सॉरी, ओ माय बैड माय बैड माय बैड, ट्वाइस ऑफ ओक्यू करना था मैंने गलती से, हाँ इस, तो ट्वाइस ऑफ ओक्यू करेंगे तो -2i
प्लस 2j प्लस 2k बनेगा, प्लस 1 टाइम्स ऑफ ओपी करेंगे तो वो बनेगा आई प्लस 2j माइनस के, यानी कि सेम रहेगा, डिवाइडेड बाई 3। तो जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 1/3, एंड दिस वुड बी -2i प्लस आई, मतलब माइनस आई, प्लस 2j प्लस 4j, एंड प्लस 2k माइनस k विल बी k। तो हमारे पास ओ आर वेक्टर व्हेन डिवाइड करेगा आर इंटरनली पी क्यू को, ये बनेगा। और जब हम एक्सटर्नली डिवाइड कर रहे होंगे तो इसी फॉर्मूले में हम ऊपर और नीचे दोनों जगह माइनस यूज कर लेंगे प्लस की जगह। यानी कि अगर इस बार मेरे को एक्सटर्नल डिवीजन पे ओ आर वेक्टर चाहिए तो ओ आर वेक्टर होगा 2 टाइम्स ओ क्यू माइनस 1 टाइम ओपी, 2 टाइम्स ओ क्यू माइनस 1 टाइम्स ओपी डिवाइडेड बाई, पीछे यहाँ पे 2+1 किया था हमने फर्स्ट केस में, इसमें हम 2 - 1 करें तो 2 OQ करेंगे तो फिर से यही आएगा, यानी कि -2i। यहां से इसको हटा देते हैं, इनफैक्ट यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं, ओ आर बन जाएगा हमारे पास। अब देखो 2 - 1 तो 1 ही रहेगा, तो नीचे वाला पार्ट तो खत्म। ट्वाइस ऑफ OQ करेंगे तो ये हमें पता है -2i प्लस 2j प्लस 2k, ठीक है। और इसमें से हम माइनस करेंगे ओपी को, विच वुड बी आई प्लस 2j माइनस के। तो आंसर आएगा हमारे पास -2i माइनस आई वुड बी -3i प्लस 2j माइनस 2j, जे कैंसिल हो जाएगा, 2k प्लस के हो जाएगा ये, तो प्लस के 3k हो जाएगा, तो -3i प्लस 3k। इस बार हमारे पास ओ आर वेक्टर की वैल्यू। समझ आई बात, कैसे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इंटरनल एक्सटर्नल डिवीजन के लिए? Yes, sir. नोट डाउन कर लिया और मेरे को नेक्स्ट क्वेश्चन बता सकती है जब भी रेडी हो। Sir, I have doubt in probability, यस, but it's not a NCERT question, it's extra ठीक question. है, ठीक है, कोई नहीं चलेगा। Um, out of 9 outstanding students of a school, there are 4 boys and 5 girls. A team of 4 students is to be selected for a quiz competition. Find the probability that 2 boys and 2 girls are selected. 9 में से 4 boys, we have 4 boys and 5 girls, right? Yes, sir. And a team of how many students? What do we need to do? I For, mean, we have to select a team, na? Team of 4 students, okay. In which? yes, sir. Is to be selected for a quiz competition. Okay. And So we should have 2 that boys 2 and 2 boys girls. and 2 girls are selected. Yes, correct. Okay. So we have to find the probability. Probability. The team of 4 students will contain 2 boys and 2 girls. Right? That we need to do. अब इसके लिए हमें वही फिर से फेवरेबल अपॉन टोटल करना हो, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। तो पहले तो मुझे ये बता कि अभी हमारे पास टोटल 9 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और हमें क्या करना है, उससे 4 स्टूडेंट्स की एक टीम बनानी है। कितने तरीके से हम ये काम कर सकते हैं? डू यू नो अबाउट दिस? हाउ मेनी वेज कैन वी डू दिस? ओके, तो हमें क्या चाहिए? 4 स्टूडेंट्स चाहिए आउट ऑफ 9, राइट?
Yes, sir. तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को निकालना पड़ेगा टोटल वेज ऑफ सेलेक्टिंग 4 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 9। यानी कि मेरे को सबसे पहले पता करना है टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स यहाँ पे क्या होंगे कि कितने अलग अलग तरीके से, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन आई सेलेक्ट 4 स्टूडेंट्स out of the 9 students. And this is a problem for combination now, permutation and combination. So we are basically selecting 4 students out of 9. So that would be 9C4. ये होगा टोटल वेज। बट हमें क्या चाहिए, वेज टू सेलेक्ट, ways to select 2 boys and 2 girls. तो सेलेक्ट करने का काम, ये जो सेलेक्टिंग है, ये सेलेक्टिंग इज बेसिकली कॉम्बिनेशन। जब भी आप सेलेक्ट करना चाहते हो तो आपको कॉम्बिनेशन यूज करना होगा। कॉम्बिनेशन क्या है, ये सी। क्या 9C4 ओपन करना आता है फातिमा? So we will use the NCR formula. यस, कैसे करते हैं बता सॉल्व। NCR is equal to n factorial divided by n minus r factorial into r factorial. गुड। तो मैं इसको 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। ठीक है, और भी मैं इसको आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ। एक और तरीका सुन, इसकी बजाय, मतलब ये तो है ही बिल्कुल, ये तो हमेशा पता ही होना चाहिए, बट अगर इसको जल्दी सॉल्व करना है ना, तो हम क्या करेंगे। अच्छा ये बता, 5 फैक्टोरियल को कैसे ओपन करते हैं? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5 फैक्टोरियल? हाउ डू यू कैलकुलेट इट? एक्सपैंड कर देते हैं, कहां तक, 1 तक मल्टीप्लाई कर देते हैं सारे नेचुरल नंबर्स को। जिस नंबर का भी फैक्टोरियल वी हैव टू फाइंड, we will take that number and we'll multiply all the natural numbers lesser than that number with the number itself. तो अगर 5 फैक्टोरियल निकालने गए तो 5 से लेके 1 तक सारे नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट निकाल लो। अगर मेरे को 10 फैक्टोरियल चाहिए तो 10 से लेके 1 तक, यानी कि 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इस तरीके से मैं किसी भी फैक्टोरियल की वैल्यू निकाल सकता हूं। वी कॉल इट एक्सपेंशन। ओके, अब if I want to calculate 9C NCR or 9C4 in this case, so what I would do is I will expand 9 factorial, जो भी ऊपर लिखा होगा n, I'll expand that factorial up to r times, up to 4 times. तो मैं 9 का फैक्टोरियल तो ओपन करूंगा पर 4 ही बार करूंगा, यानी कि 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। जैसी 4 टर्म्स कंप्लीट हुई, आई वुड स्टॉप राइट देयर। ओके, और डिवाइड कर दूंगा इसको जो भी नीचे लिखा हुआ है उसके फैक्टोरियल से। दिस इज हाउ वी कैन इजीली कैलकुलेट दिस। ठीक है, अभी ये अप्लाई करेंगे आगे चलते हुए। ठीक है, अभी बात करते हैं, ये तो हो गई टोटल आउटकम्स की बात। अब बात कर रहे हैं हम फेवरेबल आउटकम्स की। फेवरेबल आउटकम क्या है? द फेवरेबल थिंग हियर इज टू select a team of 4 students in which there are 2 boys and 2 girls. So basically, out of the 9 students, we have to select 2 boys and 2 girls. Now, how can we do that? Again, we have to select. So we will use C combination, right? अब मेरे So को 2 number of boys, ways for selecting 2 boys from a group of 4 boys is 4C2. correct. And number of ways of selecting 2 girls out of 5 girls would be, 5C2. और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि चॉइसेस डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। टोटल चॉइसेस इतनी हो जाए 4C2 इंटू 5C2। तो प्रोबेबिलिटी जो बचे वो होगा, दिस वुड बी फेवरेबल, दिस वुड बी टोटल, हेंस रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी, लेट्स कॉल दिस इवेंट एज ए। सो वी आर फाइंडिंग आउट P of A. So PA would be 4C2। 4C2 को ओपन करेंगे तो देख 4 इंटू 3, 2 बार एक्सपैंड करूंगा बस, और डिवाइड कर दूंगा 2 फैक्टोरियल से जो नीचे लिखा हुआ है। सिमिलरली 5C2 को ओपन करके दिखा, चल कैसे करेंगे, सेम रूट से। 5 into 4
correct? Divided by 3 factorial. Why 3? This is 2. तो 5 को एक्सपैंड करना है उतनी बार जितना नीचे नंबर लिखा हुआ है, और नीचे वाले नंबर का फैक्टोरियल लिख देंगे बस। तो 5 इंटू 4, क्योंकि 2 लिखा हुआ था नीचे, तो 2 ही टर्म्स लिखूंगा इसकी बस, एंड डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। सिमिलरली 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल। अब 2 फैक्टोरियल की वैल्यू होगी 2 इंटू 1, 2 फैक्टोरियल अगेन 2 इंटू 1, तो 2 फैक्टोरियल तो 2 के ही बराबर होगा। इसे मैं हटा, कैन यू टेल मी द वैल्यू फॉर 4 फैक्टोरियल? Two. Why 2? How would you calculate 4 factorial? चल पहले start कर। How would you calculate? देख, जैसे 5 फैक्टोरियल ऊपर ओपन किया हुआ है वैसे ही कर बिल्कुल 4 फैक्टोरियल को। We need to expand 4 factorial. Yes. So it will become 4 into 3 into 2 into 1. Which is after multiplication what? 24. Yes, good. 24. So now they both will multiply, and this they get multiplied. So we can write it as 4 into 3 into 5 into 4 into 24, right? Divided by 2 into 2, which can be written as 4. So 4 into 9 into 8 into 7 into 6. That is how we solve it. 4, 4, 6, 4. Now 4, 8, 2. This 2 will get with 4, 2, 3, 3. So we are left with 2 into 5, which is 10, divided by 7 into 10 by 3. 21. Yes. Is that the correct answer? Yes, sir. समझ आया क्वेश्चन? You understand it? Yes, sir. Okay, when it is your turn, you can ask me more questions. जितना भी डाउट है सब। So it's same probability question. I guess. Which one? Extra question. हाँ, बिल्कुल. Husband and wife appears in an interview. The Okay. probability of husband's selection is 1 by 7. Then that of wife's selection is 1 by 5. Okay. There are 3 bits of question. First one is, what is the probability that both of them be selected?
Okay, sorry. Uh, Probability of both of them selected. yes. Okay. And Only elected. sorry, I didn't get you. Only one of them is selected. Okay. And Thus, none will be selected. can you read the question again, Fatima? A husband and wife appears in an interview. The probability of husband selection is 1/7, then that of wife selection is 1/5. Okay, good. So probability of both of them selected, it means that H is also happening. That is, let's call husband as H and wife as W. So we have two events. H will be successful. The probability of H being successful is 1/7, and probability of W being successful is 1/5, right? So hence we can say that probability of husband not successful is 6/7, and probability of wife not successful would be how much? Probability of selection of wife is 1/5. So probability of not the selection of, I mean, probability that wife will not be selected will be how much? 4/5. 4/5. So we have to find out the probability of both of them selected. So both of them selected means that we have to find out the probability H intersection W. H intersection W. That is, we want H as well as W. We want the intersection. We want the common of both of them. So we want both of them actually. That means this. So if I say that probability of none of them is selected, so we have to first write them into the correct form. As soon as you got the form, then you can solve the question. So in the third part, we want the probability of none of them is selected. That is, if we are saying none of them is selected, it means that we do not want, we want neither husband nor wife. It means neither husband means H complement. H complement represents not husband. So none of them means neither husband nor wife and the intersection of them. So we have to understand how to write this. Probability of A intersection B is that we want A as well as B. Probability of A intersection B, I mean A complement intersection B means that we do not want A, but we want B. We do not want A, but we want B. And probability of A complement intersection B complement would be that we do not want A and we do not want B. So that is how we can write, like, I mean, we can increase the events as well. So let's say, for example, we have 10 events. So instead of husband and wife, there are 10 candidates. Okay, let's call them A1, A2 up to A10. Now, how would we write the probability that we want A2 to be selected? So if I want A2 to be selected, I do not want A, I want A2, I do not want A3, I do not want A4, I do not want A5 up to A10. So I will take the intersection of all the 9 complements and one event. That is how I can write the expressions. समझ आई ये बात? Yes, sir. तो अगर अभी मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालना है, चल लेट्स से you will try this second part. Okay, how to write this expression in the form of probability. I want only one of them is selected. So only one of them is selected means either husband is selected and wife is not, or husband is not selected and wife is selected, right? So how can I write this? पहले पहले ये बता, सिर्फ इतना बता कि अगर हस्बैंड को सिलेक्ट करना है और वाइफ को नहीं करना है, so how would we write that? We will write probability of Yes. H complement
H intersection. अच्छा, okay. H complement. My bad. It's okay. Only one of them is selected. हम चाहते हैं husband select हो, wife select ना हो. तो कैसे लिखे? हाँ हाँ बोल, कोई बात नहीं, गलती कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं. H complement. After that, H complement, then intersection W. okay. So if I write this, Fatima, तो इसका मतलब ये नहीं है H complement means that we do not want husband, but we want husband this time. We do not want wife. और एक केस बनेगा दूसरा, that probability H complement intersection W, जो अभी तुमने बोला. Intersection W. Okay, sir. तो दो केस बनेंगे अलग अलग, दोनों का प्रोबेबिलिटी निकालना होगा. नाउ फर्स्ट पार्ट तो ये होता है कि हाउ टू राइट दैट. Now the second part is how to calculate this. But in this case, it is very simple. Why? क्योंकि हस्बैंड का सेलेक्ट होना या नहीं होने से वाइफ के सिलेक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. What I mean to say is basically these events are independent. Selection of husband is not dependent on selection of wife. They are independent events. Probability of selection of husband in the interview is this, and probability of selection of wife in the interview is this, and they are independent of each other. I mean, husband can't do anything about wife's interview, and wife can't do anything about husband's interview, right? So in this case, these events are independent, and when the events are independent, you can find out the value of any event. I mean, any intersection. So if the events are independent, the probability is just simply the probability of every event is multiplied. So let's say as the events are independent here, so rewrite the solution now. This is the solution. As the events are independent here, or you can just tell the events are independent here. So in case of independent events, you can write this H intersection W as PH into PW. जिसकी कोई वैल्यू आएगी, in this case that value is 1/35. So again we'll calculate this. So this should be probability of H complement into probability of W complement. So you have to find out the individual probability जो भी events दिए गए हैं intersection के अंदर और multiply कर देना, बस simple. So 6/7 into 4/5. Yes, that should be how much? 24/35. Correct. Can you calculate this part? Tell me the value, final value. So here also we will use P of H into P of W Complement. plus Not the P of H intersection P of W. yes. But just focus on the events. These are, I mean, in the first part, this is not PW, this is PW complement, right? Yes, sir. Yeah. So tell me the final answer. This is the answer. Two by seven. 2/7. Yes, correct. Good. By taking LCM. Yes. So 10/35, and which we can
Simplify to 2 by 7. Now see, 10 by 35 ये हुआ, 24 by 35 ये हुआ, और 1 by 35 ये हुआ. If you add all these terms, you get 35 by 35, which is 1. Now why is this happening? क्योंकि देख, अगर ये जो भी whatever the experiment is being happening here, that has 3 outcomes. Either both of them will be selected. I mean, here husband and wife are going for an interview. So either both of them will be selected, or only one of them is selected, or none of them is selected. So we have found out the probability of all the possible outcomes for this experiment. And the sum of the probability should be 1 in this case. If this wasn't 1, तो हमने कुछ ना कुछ गलती करी है बीच में. समझ आई बात? Yes, sir. So for the second one, 10 by 35, can we write it as 10 by 35 or 2 by 7? 2 by 7 is cool. I mean, if possible, you have to always simplify the fraction. 2 by 7 is Okay. cool. Sir, I have one more question. Yes, please. ABC Builders signed a contract of building a church. The layout of the church was made, and it was decided that it would have big windows on the sides and front. The windows was to be of the shape of a rectangle surmounted by an equilateral triangle. Okay, just The a minute. perimeter Cool. Yes. Yes, yes. The windows was to be of the shape of a rectangle surmounted by an equilateral triangle. The perimeter of the window was 16 units. Okay. The perimeter of the window was 16 units. The length Perimeter of the of the window. rectangle. Perimeter of the window, right? Sorry. Yes. Okay. So I thought this perimeter is 60. Perimeter of the window. Okay. Cool. Proceed, please. The perimeter of the window was 16 units. The length of the rectangle is denoted by Y. Cool. And its width, that's also the side of the equilateral triangle, is denoted by X. Okay. So there are 4 bits. Width is denoted by what? Width, the perimeter of the window was 16 units. The length of the rectangle is denoted by Y, and its width, that's also the side of the equilateral triangle, is denoted by X. Cool. After this? There are 4 bits of questions. Okay. First one is, find the total area of the window in terms of Y alone.
Total area of the window in terms of y alone. Cool. Next. And second one is, what is the value of y when the area is maximum? ठीक है. And third, what is the value of x when the area is maximum? Cool. Fourth one, what is the value of x plus Value of x plus 2x plus y? 2x plus y. Yes. Only after this they will tell you something. Value of 2x plus y. Acha. Yes, sir. Okay, good. Okay. So perimeter of the window. Let's start with the question from here. So this is a rectangle, and they've told us the width is x, so this has to be x. Then the length is y, so this has to be y. And this is an equilateral triangle, so all the sides are equal, so x, right? Now, how do we find out perimeter? My first question is this: how do we find out perimeter? I mean, what is perimeter? So let's say if this point is A, Fatima, and I'm Yes, moving sir. from A. So मैं अगर A से move करना start करता हूँ, and I cover the whole boundary line. Okay, I cover the whole boundary line and come back to this point A. Then this distance is the perimeter. Talk about any shape, any figure. If you're talking about perimeter of that figure, so you just have to measure the distance of its boundary line. So in this case, the perimeter would be AB plus BC plus CD plus DE plus EA. समझ आया क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल अगर तेरे को एबीसी का पेरीमीटर निकालना होता है ना, तेरे को ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालना होता है, तो AB प्लस BC प्लस C उसकी बाउंड्री जो भी है, पूरा बाउंड्री लाइन पे आप घूम जाओ, सेम पॉइंट तक वापस आने में जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो पेरीमीटर है उस फिगर का. तो अगर मैं इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकाल रहा होता तो A से स्टार्ट करता A to C, then C to D, then D to E, then E to back. ओके, बट अभी इस केस में मैं पेरीमीटर ऑफ द विंडो दिया हुआ है, तो पेरीमीटर ऑफ द विंडो मींस perimeter of the window. Let's calculate the perimeter of window. So it should be x plus x so this should be x plus x plus y plus x plus y. This should be x plus x plus y plus x plus y, and which is already given to you. There is 16. I think the question is incorrect. Somewhere, something has to be. I mean, the perimeter of the window has to be this. The fourth part is given according to this. हम एक इसमें छोटी सी mistake कर देते हैं. क्या करते हैं कि we while calculating perimeter we also add the side AC, but AC is not the boundary line of this figure. AC तो कोई बीच से लाइन जा रही है विंडो पे. AC is not will not be considered in perimeter. तो अगर AC को हम बाउंड्री लाइन में कंसिडर कर लेते तो हमारे पास इसका सम आता 4x plus 2y, which right now is 3x plus 2y. और अगर हमारे पास 4x plus 2y होता है यहाँ पे, तो मैं 2 कॉमन ले सकता था, तब मेरे पास 2x plus y की मैं वैल्यू मिल जाती. बट अभी तो नहीं मिल पाएगी आई गेस. Yes, sir. It's 3x plus 2 is equal to 16. Yes, that is how we should start. और अभी हमें बोला गया फर्स्ट केस में फाइंड द टोटल एरिया ऑफ विंडो इन टर्म्स ऑफ वाई. ओके, सो टोटल एरिया ऑफ विंडो. अब देख मेरे को एक्स और वाई में रिलेशन मिल गया, तो टोटल एरिया ऑफ विंडो क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ट्राइंगल एबीसी, राइट? एंड Area triangle.
है ना, एरिया ट्राइंगल वाला और रेक्टेंगल वाला दोनों का एरिया ऐड कर दो आप, तो टोटल एरिया आ जाएगा, राइट? Yes, sir. Now the area of triangle would be, the triangle is equilateral. Do you know the area of an equilateral triangle? Root 3/4. Root 3/4 into what? Length into breadth. X square. I mean side square. Side is same na, in this case. Root Yes, 3/4 into side square. Side is x square. Plus, now the area of a rectangle is length into breadth, right? So this should be xy. Yes, sir. अब तेरे पास x और y का रिलेशन है. Put the value of x from here, right? So the value of x would be 16 minus 2y divided by 3. Take this value and put it in this question. So you will find out area of window. अच्छा पहले यहाँ तक नोट डाउन कर ले, then I'll proceed. जब हो जाए Yes. मेरे को बता दो. तो पहले इस तरीके से हम एरिया ऑफ विंडो इन टर्म्स ऑफ y कैलकुलेट करें. पहले पेरीमीटर ऑफ विंडो से x और y का रिलेशन निकाला. अब हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं. Yes, I have noted. So we know area is root 3/4 x square plus x into y, and we already have this equation where x is 16 minus 2y divided by 3. This is known as first equation. We have named it as first equation. So we can using one, we can put back the value of x in terms of y, which would be 16 minus 2y by 3 whole square plus 16 minus 2y divided by 3 into y. So this would be 3 square would be 9, root 3 by 36. Then this would be 256 plus 4y square minus 64y plus this would be 1 by 3 and this would be 16y minus 2y square. Right? And also we can take you can take 2 common from here. If you take 2 common, then this would be just y and this would be 8 minus y. अगर हम यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं, we can also write it as 2 into 8 minus y divided by 3. और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 कैंसिल हो जाएगा. So this would be 9. मैं अभी इसको फटाफट से चेंज कर दूं. This would be 9. Right? 8 square would be 64 plus y square minus 16y, right? Plus 1 by 3 into this. Right? So this is your area right now. This is Yes. your area. Now you have to find out the value of y when area is maximum. So do you know how to solve this? So there is a concept related to maxima and minima. Maxima and minima concept to find out max area. एरिया आपके पास है. अगर आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहते हो तो पुट
DA यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ A एरिया with respect to differentiation of y should be 0. जिस वेरिएबल में आपने ये इक्वेशन लिखी है, अगर आप एरिया का डिफरेंशिएशन उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करते हो और उसको 0 पुट करते हो तो आपको मैक्सिमम मिनिमम मिलेगा। तो अब हम वो करेंगे। सो DA वुड बी DA by dy वुड बी √3/9 क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। 64 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, मतलब मल्टीप्लिकेशन में कांस्टेंट है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पे जब हम अंदर जाएंगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2y और ये हो जाएगा माइनस के 16 प्लस 1/3 would be as it is. This would be 16 minus 4y. Put this value as 0. So this would be √3/9. In fact, I'm multiplying all of it. So this would be 2√3y/9 minus 16√3/9 plus 16/3 minus 4/3y is equals to 0. So we can further solve it. Take all the y together and take all the constant to the right hand side. So this would be 2, take y common. So this would be 2√3/9 minus 4/3. I can write 4/3 as, if I multiply numerator and denominator both by 3, this would become 12/9. We multiply both Yes, of sir. them by 3. So this becomes this, and all this part 16√3/9 minus 16/3. So I'm multiplying this with 3 as well. So this will become 48/9. Right? And now we can solve it. I'm simplifying it. This would become y/9 to √3 minus 12. So I can take 2 common. This would become √3 minus 6. And is equals to, I can take 16/9 common. So this would become √3 minus 3. Oh, 9 cancel to 8. This should not come like this. Just a minute. Yes, sir. Is the value of y 8? Sir, it's not given. Okay. So maybe either we may have done a mistake, and if we have, then in that case you have to check it. But the procedure is this, and if not, then the value would be this, which doesn't look like the right value, because I mean this is a positive value, obviously not negative, but लग नहीं रहा मेरे को ये ऐसी अजीब सी value होगी, because this is very strange to get √3 in the numerator and denominator. So if I take 2 common, yes, 6, 16, yes. Yeah. So y should be this. And also we have to show this, that the area is maximum at this. So for that, we have to find out d2a by dy square. What does that mean? Differentiate it with respect to y once again, and the value should be negative. Now, differentiate it again with respect to y. So this would be, see, √3/9 would be as it is. Then 0 is 0, 2y is 2, and minus 16 is also 0. 1/3 will be as it is. 16, differentiation of 16 would be 0. I'm differentiating this, okay? 0 minus 4. Yes, sir. So this becomes, this value is 2√3/9, 2√3/9 minus 4/3, which is again 12/9.
नाउ दिस इज अ नेगेटिव वैल्यू। कैसे? यहाँ पे 2√3 है, यहाँ पे 12, ऑब्वियसली 12 बड़ा है 2√3 से, तो जब माइनस करेंगे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, I can write this as 2√3 minus 12 upon 9, which is definitely negative. Why? क्योंकि √3 की वैल्यू 2 से भी कम है, √4 2 होता है, तो √3 2 से छोटा है, 1.73 होती है वैसे √3 की वैल्यू, बट उसे छोड़ो, अगले से √3 की वैल्यू 2 भी होती, तो भी 2 into 2 4 बनता है, और 4 भी 12 से छोटा है। We know that √3 is lesser than 2, बट अगर ये 2 भी होता तब भी 2 into 2 4 minus 12 नेगेटिव आता, तो d2a by dy स्क्वायर अगर नेगेटिव है, इट मींस that for this value area is maximum. तो आई थिंक हमने करेक्ट ही किया है, बट मेथड ये होगा, हम इसको dA by dy को पुट करेंगे 0 के बराबर और फाइंड आउट करेंगे, सो यू कैन चेक फॉर द कैलकुलेशंस, otherwise this is gonna be the answer. And if I find out y, after that I can also find out x using this equation first. Okay, yes, sir. Right? So first we will put dA by dy is equal to 0. Yes. And Then if then there we will get a value of y or value of your variable, some value of variable from that equation. It can be this if we have done it correctly, and it can be anything else if we have made a mistake. Yes. Yeah. So you will definitely get a value of y from this equation, and after that you have to check for second derivative. अगर second derivative की value उस y को पुट करने पे, अब देख यहाँ पे इस वाले केस में तो जैसे मैंने सेकंड डेरिवेटिव निकाला तो y एलिमिनेट ही हो गया पूरा, वी डोंट नीड y, हमारे पास कांस्टेंट ही वैल्यू है सीधा निकल गया, बट इट विल नॉट हैपन एवरी टाइम, समटाइम्स y की वैल्यू आपको पुट करके देखना पड़ेगा, यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है, जस्ट दिस एक्सप्रेशन, इसमें हमें y की वैल्यू पुट करके देखना पड़ेगा, अगर वो पॉजिटिव आता है तो उस y पे मिनिमम वैल्यू आ रही होगी एरिया की, अगर वो नेगेटिव आता है तो उस y पे वैल्यू मैक्सिमम आ रही होगी एरिया की। अभी तक इस केस में नेगेटिव आ रहा है तो एरिया मैक्सिमम है इसका। एक मिनट रुको।